Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Hello students, now we'll start the problems on bonus shares. Before starting the problem, again my suggestion to the students, take a printout of the problems which I have given in the description. Below the video you'll find the description. In the description you'll find the link. Go to that link, take a printout and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution, explanation, everything. Otherwise, simply if you watch the video without having any problems, it will not give you your complete knowledge. So follow my suggestion. First problem I am reading out. See the problem number 1. The balance sheet of BG Limited as on 31st March 2002 showed the balance of reserve fund and P&L account 36,000, 29,000 respectively. So this company has a balance of reserve fund and P&L account. Reserve fund 36,000, P&L account 29,000. It is decided to capitalize a part of accumulated profits by issuing bonus share of rupees 100 each for every 4 shares of rupees 100 each presently held. तो कंपनी डिसाइड कर रही है कि अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे बाय इश्यूइंग बोनस शेयर्स. तो हाउ द बोनस शेयर्स विल बी इशूड? फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1 बोनस शेयर विल बी इशूड. हर 4 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर देंगे. फॉर दिस पर्पस 10,000 रुपीज आर टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम रिजर्व फंड. तो स्पेसिफिकली दे दिया कि कौन से रिजर्व्स में से कितना पैसा निकालना है. तो ये हमको ये बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए इट इज आस्किंग यू टू विदड्रॉ 10,000 rupees from reserve fund and the balance from profit and loss account. वो 10,000 रुपए छोड़कर और जितना भी बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से विड्रॉ करो. The equity capital of the company paid up at present consists of 700 equity share of 100 each. Past necessary journal entries. So presently the company is having 700 shares. Now you understood the problem. Now we'll start. First of all, present balance. It is given in the problem. Present reserve fund balance 36,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस 29,000. ये दो बैलेंसेस है. नाउ कितने बोनस शेयर्स इश्यू करेंगे? फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड 1 बोनस शेयर इश्यूड. तो कंपनी डिसाइड कर रही कि 4 शेयर्स के बदले में 1 बोनस शेयर देंगे. तो प्रेजेंटली द कंपनी इज हैविंग 700 शेयर्स. तो 700 शेयर्स के बदले में कितने बोनस शेयर होंगे? तो 700 डिवाइडेड बाय 4 into 1 is equal to 175 shares. So the company has to issue 175 shares of rupees 100 each. The amount required will be 175 into 100. 17,500 rupees we require for declaring bonus. अब ये 17,500 कैसा विड्रॉ करेंगे? रुपीज 10,000 should be drawn from reserve fund. प्रॉब्लम में दे दिया कि 10,000 रुपए रिजर्व फंड में से यूटिलाइज करो. ठीक है, 10,000 रुपीज इसमें से रिजर्व फंड में से निकाल दिए. तो 17,500 माइनस 10,000 कितने बचे? 7,500 शुड बी ड्रॉन फ्रॉम P&L अकाउंट. ये वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गया. नाउ विल पास द जर्नल एंट्रीज. द फर्स्ट जर्नल एंट्रीज डेबिट द रिजर्व्स फ्रॉम विच वी आर विड्रॉइंग द मनी. अब पैसा जो निकाल रहे हैं वो रिजर्व को डेबिट करेंगे. तो हम दो चीजों में से निकाल रहे हैं, रिजर्व फंड में से भी निकाल रहे हैं, P&L अकाउंट में से भी निकाल रहे हैं. दोनों को डेबिट करेंगे. रिजर्व फंड अकाउंट डेट आर 10,000, P&L अकाउंट डेट आर 7,500 to bonus to shareholders 17,500, being the amount withdrawn for declaring bonus. Narration: being the amount withdrawn for declaring bonus. Second entry: bonus to shareholders account डेट आर to share capital 17,500. या bonus to shareholders क्रेडिट करें या डेबिट कर देंगे. Bonus to shareholders account डेट आर to share capital, being 175 equity shares. Being 175 equity shares of rupees 100 each issued as fully paid bonus shares. See the wording. The narration you have to write. I am not writing down the narration. It will take more time. That's why I am dictating. Being 175 equity shares of rupees
100 each, issued as fully paid bonus shares. That's all. This is problem number 1. Now I am moving on to problem number 2. The balance sheet of Z Company Limited is as follows. Equity and liabilities balance sheet is given. Share capital 40,000 shares of 10 each 4 lakh, reserves and surplus 6 lakh. तो इस वक्त कंपनी के पास 4 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, जिसमें 40,000 शेयर्स ऑफ 10 each और रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख. नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स है 5 लाख, करंट असेट्स है 5 लाख. तो बैलेंस शीट, सिंपल बैलेंस शीट गिवन. इट इज डिसाइडेड टू इश्यू 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड. कंपनी डिसाइड कर रही है कि फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड 1 बोनस शेयर. तो जितने शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं उतने बोनस शेयर्स इश्यू करेंगे. तो प्रेजेंटली हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 40,000. प्रेजेंटली कंपनी के पास 40,000 शेयर्स है. तो हर एक शेयर के बदले में एक बोनस शेयर, तो 40,000 शेयर के बदले में 40,000 बोनस शेयर. द कंपनी इज इश्यूइंग 40,000 बोनस शेयर ऑफ ₹10 each. तो 40,000 इंटू 10 4 लाख. कंपनी को 4 लाख रुपये चाहिए बोनस शेयर देने के लिए. कहीं में से निकालेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस है. यूजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस वी कैन इश्यू द बोनस शेयर्स. 6 लाख है, 6 लाख में से 4 लाख रुपीज निकाल देंगे. राइट नाउ इट इज आस्किंग यू pass the journal entries. Only journal entries are required. So first of all, working note: for every 1 share held, 1 bonus share will be issued. Present number of shares held are 40,000. Therefore, 40,000 bonus shares of 10 each will be issued. Amount required is 4 lakh. The first entry: reserves and surplus account data to bonus to shareholders, being the amount withdrawn for declaring bonus. Second, bonus to shareholders account data to share capital, being 40,000 equity shares of ₹10 each, issued as fully paid bonus shares. Again I repeat, being 40,000 equity shares of ₹10 each, issued as fully paid bonus shares. That's all. So 2 problems we have completed. Come on students, now we'll start the third problem. I already told you that before watching the video, please have a hard copy of the problems taken from the description and make a printout of the link I have given in the description. From that link, take a printout of those problems and keep it on hand while following my lecture. Then only you can be able to understand. Okay. Now, third problem. A limited company has resolved to utilize ₹5 lakh out of its reserve fund in declaration of a bonus to shareholders. तो कंपनी डिसाइड करी है कि अपने 5 लाख रुपये जो रिजर्व फंड में उसको यूटिलाइज करेंगे बोनस के लिए. द बोनस हाउएवर इज टू बी अप्लाइड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 lakh rupees in payment of final call of 40 rupees per share on 500 shares. तो वो 5 लाख रुपीज जो डिविडेंड रिजर्व फंड में से निकालेंगे उसमें के 2 lakh rupees वी वांट टू यूटिलाइज फॉर कन्वर्टिंग द पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड. तो 5,000 शेयर्स आर देयर ऑन विच 40 rupees फाइनल कॉल इज ड्यू. तो 5,000 into 40, 2 lakh rupees is the final call money due. और जब तक के फाइनल कॉल नहीं करेंगे तब तक फ्री शेयर्स नहीं इश्यू कर सकते अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय SEBI. And 1,000 each and to the extent of 3 lakh rupees in the issue of 3,000 fully paid shares of ₹100 each to the existing shareholders. So we are using 5 lakh rupees from the reserve fund. Out of 5 lakh, 2 lakh rupees we want to utilize for converting the partly paid shares into fully paid. And after doing that, we want to issue 3,000 equity share of 100 each. 3,000 equity shares of ₹100 each, 3 lakh rupees, free bonus shares. Then give journal entries necessary to record the above transactions. Now see here. First of all, we want to take 5 lakh rupees fund from reserve fund. The entry will be reserve fund account data to bonus to shareholders 5 lakh. रिजर्व फंड में से पैसे निकाल रहे हैं इसीलिए रिजर्व फंड को डेबिट करेंगे. दैट अमाउंट विल पुट इट अंडर बोनस टू शेयरहोल्डर्स, बीइंग द अमाउंट विथड्रॉन फॉर डिक्लेयरिंग बोनस. सेकंड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, बीइंग द फाइनल कॉल ड्यू ऑन 5,000 shares at ₹40 each. Being final call due on 5,000 shares of at ₹40 each. Then bonus to shareholders account data to share final call. अभी जो फाइनल कॉल ड्यू डेबिट करे थे अब क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको करेंगे? बोनस टू शेयरहोल्डर्स.
तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेटा टू शेयर फाइनल कॉल, बीइंग द फाइनल कॉल मनी एडजस्टेड फ्रॉम बोनस, बीइंग द फाइनल कॉल मनी एडजस्टेड फ्रॉम बोनस. लास्ट एंट्री, इश्यू ऑफ 3000 फ्री बोनस शेयर्स, 3000 बोनस शेयर्स फ्री इश्यू कर रहे हैं 100 रुपीज का एक. तो एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेटा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, being 3000 equity share of rupees 100 each issued as fully paid bonus shares. That's it. This is the third problem. Short problems we have completed. 3 short problems are given. So 3 short problems we have done. Now I am coming to the main problem. First main problem. The balance sheet of Adarsha Company Limited as on 31st March 2010 was as follows. The balance sheet is given company's balance sheet. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital 1, 7,50,000. Reserves and surplus, note number 2, 8,50,000. Non-current liabilities are not there. Current liability only one trade payable 4 lakh. The total of the liability side 20 lakh. Assets, non-current assets में fixed asset 15 lakh, 15 lakh. Current asset 15 lakh. Not 15 lakh, it is 5 lakh. So total will be 20 lakh. Notes to the accounts. Share capital 1 lakh, equity share of 10 each, rupees 7.5 paid up, 7,50,000. कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक है, लेकिन 7 रुपये 50 पैसा पेड अप है, 7 रुपये 50 पैसा पेड अप. तो अभी 2 रुपये 50 पैसा आने का है. द फाइनल कॉल मनी ड्यू इज 2 रुपये 50 पैसा पर शेयर ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 1 लाख शेयर्स. रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखिए, जनरल रिजर्व 4 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 lakh है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000, टोटल रिजर्व्स इन सरप्लस 8,50,000. द कंपनी डिसाइडेड टू मेक पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,50,000 रुपीज है, वो 2,50,000 रुपीज यूज करके वी वांट टू कन्वर्ट द पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड शेयर्स. तो 3 entries we required to convert partly paid into fully paid. It was decided to issue 1 fully paid share for every 2 shares held. हर 2 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर. For every 2 shares held, 1 bonus share. तो presently how many shares are held? 1 lakh. 1 लाख शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं, तो उसके आधे ले लो, 50,000. 50,000 बोनस शेयर्स इश्यू करेंगे, एक शेयर 10 रुपये का है, तो 50,000 into 10, 5 lakh rupees. तो वी रिक्वायर 5 लाख रुपीज फॉर इश्यूइंग 50,000 बोनस शेयर्स. अब वो 5 लाख रुपए कैसे निकालेंगे, दे दिया. फॉर दिस पर्पज द शेयर प्रीमियम अकाउंट वाज टू बी यूज्ड फुल्ली एंड फर्स्ट एंड लेटर जनरल रिजर्व. तो वो 5 लाख रुपये जो चाहिए उसके लिए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए निकालना. इट इज आस्किंग यू टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी प्रीमियम. तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए निकाल लिए और 3 लाख रुपए की जरूरत है. द 3 lakh rupees should be drawn from the general reserve. That is what it is saying. Give journal entries for the above and prepare the post bonus balance sheet. Journal entry पास करना है और बोनस के बाद बैलेंस शीट बताना है, राइट. So first of all, working note. Amount required for converting partly paid shares into fully paid up shares. 1 lakh shares है कंपनी के पास, 2 रुपये 50 पैसा is due as final call. तो 1 lakh into 2.5, 2,50,000. 2,50,000 रुपये चाहिए और प्रॉब्लम में ही दे दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड. तो ये 2,50,000 रुपीज निकालेंगे हम पी एंड एल अकाउंट्स. फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड 1 बोनस शेयर. फॉर 1 लाख शेयर्स हेल्ड हाउ मच, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 into 1 is 50,000. Therefore company issues 50,000 bonus shares. ये वर्किंग नोट. Now we'll come to the solution. First, profit and loss account data to bonus to shareholders 2,50,000. 2,50,000 being the amount withdrawn for declaring bonus. Being the amount withdrawn for declaring bonus. Then share final call account data to share capital 2,50,000. Being the final call due on 1 lakh shares at rupees 2.5 each. Being final call due on 1 lakh shares at rupees 2.5 each. Then bonus to shareholders account data to share final call. अब जो फाइनल कॉल है उसको एडजस्ट कर देंगे बोनस से. तो बोनस टू शेयरहोल्डर्स अकाउंट डेटा टू शेयर फाइनल कॉल, बीइंग द फाइनल कॉल मनी एडजस्टेड फ्रॉम बोनस. नेक्स्ट, ये 3 entries. 3 entries are over regarding converting the
partly paid up shares into fully paid. Now fully paid bonus shares, 3000 shares of rupees 100 each are issued as fully paid bonus shares. So not 3000, 50,000, sorry. 50,000 bonus shares. 50,000 bonus shares are issued, each share face value 10 rupees. तो 50,000 into 10, 5 लाख. तो 5 लाख रुपये चाहिए बोनस शेयर्स देने के लिए, और प्रॉब्लम में दे दिया वो 5 लाख रुपीस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम फुल यूज करो. तो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपीस दिया है, तो वो 2 लाख रुपीस निकाल लेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेटा 2 लाख, और बाकी का और 3 लाख रुपीस चाहिए, वो 3 लाख रुपीस विड्रॉ करेंगे जनरल रिजर्व में से. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेटा 3 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर्स 5 लाख, being the amount withdrawn for declaring bonus. Security premium account data or general reserve account data to bonus to shareholders. Now bonus to shareholders account data to share capital. अब ये bonus to shareholders को डेबिट करेंगे, share capital को क्रिएट करेंगे. Narration: being 50,000 equity shares of rupees 10 each issued as fully paid bonus shares. That's it. So we have passed all the entries. Now it is asking you to show the balance sheet post bonus shares. After bonus shares, how the balance sheet will look like. Now, balance sheet of others. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, note number 1, reserves and surplus, note number 2. अब ये अमाउंट कैसा आया नोट्स आने के बाद, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करके रख देना. फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट एंड कीप इट ब्लैंक. These amounts we have to fill up from notes forming part of financial statements. So share capital note number 1, reserves and surplus note number 2, non-current liability is not there, current liability में trade payable for 4 lakh same. देखिए, whenever bonus shares are issued, only reserves and capital will get affected. The current liabilities and assets will not be affected. तो current liability में trade payable same amount, non-current assets में fixed assets same 15 lakh, current assets 5 lakh, total 20 lakh. तो कोई डिफरेंस नहीं है करंट एसेट्स में, टोटल एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में. डिफरेंस इज देयर ओनली इन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. अब नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल 1,50,000 शेयर्स. बोनस इश्यू करने से पहले जो बैलेंस शीट था, वो बैलेंस शीट में शेयर्स दिया है 1 लाख, बट बोनस शेयर्स 50,000 इश्यू कर दिए. तो पहले के 1 लाख शेयर्स और बोनस शेयर्स 50,000 टोटल मिलाकर 1,50,000 equity share of rupees 10 is fully called and paid up 15 lakh. Now यहाँ पर explanation देना कि वो 1,50,000 कैसा आया. In that 1,50,000, 50,000 shares are issued as fully paid bonus shares. वो 1,50,000 में 50,000 equity share ऐसे हैं जो fully paid bonus shares issue करे. ये explanation लिखना जरूरी in the note. Remember, presentation is very important in company accounts. आप ये नहीं समझना हम रफली कैसा भी कर लेंगे, बैलेंस शीट टैली हो गया तो मार्क्स मिलता. दैट इज अ रॉन्ग नोशन. नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि बैलेंस शीट टैली होते ही हमको मार्क्स फुल मिल जाते. नो, सॉरी. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो वर्डिंग लिखना है, जो वर्ड्स यूज करना है, सेम वर्ड सेम प्रेजेंटेशन यू हैव टू गिव in company accounts. So these are wordings you have to write. Next, reserves and surplus. अब reserves and surplus में प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000 दिया था बोनस शेयर से पहले, वो 2,50,000 हम यूज कर लिए. अब कुछ भी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपये पहले थे बैलेंस शीट में, लेकिन बोनस शेयर्स के टाइम पे उसको यूटिलाइज कर लिया पूरे 2 लाख रुपीज. अब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है. जनरल रिजर्व पहले 4 लाख रुपीज था बोनस से पहले, वो 4 लाख रुपीज में से 3 लाख रुपीज हम यूज कर लिए, तो बचा हुआ रिजर्व्स 1 लाख. तो जनरल रिजर्व 1 लाख, वी हैव टेकन 1 लाख. नाउ यू कैन सी 15, 16 plus 4, 20, 15 plus 5, 20. Balance sheet is tallied. Hope you got the confidence on journal entries when bonus shares are issued. It's a very simple topic. Little bit, थोड़ा सा concentrate करेंगे तो ये topic easily understood हो जाएगा. Hello students, come on, now we'll start problem number 2. Srinidhi company has accumulated large profits and its directors decided to make bonus issue to make capital represent the financial position. So the company has decided to issue bonus shares because they have lots of accumulated profits.
In details, paid up capital 2 lakh rupees, 25,000 equity shares of 10 each rupees 8 paid up. तो पार्टली पेड शेयर्स 10 रुपये का एक शेयर है, लेकिन कंपनी कॉल्ड अप एंड पेड अप 8 रुपीज है, तो 2 रुपीज और मंगाना है. तो 25,000 shares into 2 rupees. So 50,000 rupees we require for converting partly paid shares into fully paid. Then general reserve 80,000, P&L account 1 lakh, 4% debentures 70,000, and assets 4 lakh 50,000. The directors decided to issue one fully paid bonus share at a premium of 2 rupees for every 5 shares held. अब डायरेक्टर्स डिसाइड करें कि एक बोनस शेयर इश्यू करेंगे फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, 5 शेयर के बदले में एक शेयर. तो यहां पर 25,000 25,000 शेयर्स है, तो 25,000 शेयर्स को कितने बोनस शेयर मिलेंगे वर्किंग नोट में भी मालूम करेंगे. एक शेयर 10 रुपये में है, लेकिन उसको 12 रुपये में इश्यू करेंगे, 2 रुपीज प्रीमियम, यानी बोनस शेयर जो मिलेगा वो 12 रुपये का एक समझिए. And pass journal entries to implement the above and prepare the balance sheet of Srinidhi company after bonus issue. Exactly similar. First, we'll make some working note, then pass the journal entries, then balance sheet. For every 5 shares held, one bonus share will be issued. Problem में दे दिया है हर 5 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर. कंपनी के पास इस वक्त 25,000 शेयर्स हैं, तो 25,000 शेयर्स के लिए कितने बोनस शेयर्स? 25,000 divided by 5 into 1 is 5,000. The company issues 5,000 bonus shares of 10 each at a premium of 2 rupees per share. यानी 12 रुपये में इश्यू करेंगे. तो amount required for bonus shares 5,000 into 12, 60,000 rupees. We have to withdraw 60,000 rupees from general reserve for declaring bonus. Then amount required for converting partly paid shares into fully paid 25,000 into 2, 50,000. So we need 50,000 rupees for converting partly paid shares into fully paid shares. And also we require 60,000 rupees for issuing fully paid bonus shares, right? Working notes completed. Now, first journal entry. First of all, we have to convert the partly paid shares into fully paid up shares. Then only we can issue bonus shares. So 50,000 rupees we require for converting partly paid. कैसे से निकालेंगे उसको? General reserve. तो general reserve 50,000 to bonus to shareholders 50,000, being the amount withdrawn for declaring bonus. Then share final call account data to share capital, being the final call due on 25,000 shares at rupees 2 per share, being the final call due on 25,000 shares at rupees 2 per share. Then bonus to shareholders account data to share capital, bonus to shareholders account data to share capital, being the final call, not share capital, there is a mistake here, share final call. Bonus to shareholders account data to share final call, being the final call money adjusted from bonus. Final call money adjusted from bonus. That's all. The 3 entries are over regarding converting the partly paid shares into fully paid. Now we have to issue fully paid bonus shares. 5,000 bonus shares issue करना है. अब उसके लिए कैसे से निकालेंगे? Profit and loss account. Profit and loss account data to bonus to shareholders 60,000. being the amount withdrawn for declaring bonus. A bonus to shareholders account data 60,000 to share capital to security premium. क्योंकि 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं बोनस में 12 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज शेयर कैपिटल में डालेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 into 10, 50,000 to security premium account 5,000 shares into 2 rupees 10,000, being 5,000 equity shares, being 5,000 equity share of rupees 10 each, issued at a premium of 2 rupees per share as fully paid bonus shares. Again I repeat the narration for the last entry, being 5,000 equity share of rupees 10 each, issued at a premium of 2 rupees per share, issued as fully paid bonus shares. Over. Entries are over. Now we are required to make the balance sheet. The balance sheet का presentation, equity and liabilities. Shareholders fund, share capital, note number 1, reserves, note number 2. Non-current liabilities, long-term borrowings are given in the problem 370,000. Current liabilities are not given, right? And assets 4,50,000. Now normally what will happen, the total of liabilities will be equal to total of assets. So we are taking sundry assets 4,50,000. Now we have to show
the share capital, reserves and surplus, long term borrowings in the notes. Notes में बताएंगे. तो notes forming part of financial statements, share capital 30,000 equity shares. बोनस शेयर इश्यू करने से पहले बैलेंस शीट में 25,000 शेयर्स थे और बोनस शेयर्स 5,000 इश्यू कर दिए. तो 25,000 plus 5,000 30,000. 30,000 equity share of rupees 10 is fully called and paid up 3 lakh. Of the above, 5,000 shares are issued as fully paid bonus shares. Explanation देना कि वो 30,000 में 5,000 bonus shares issue करे सर. Then reserves and surplus, general reserve 30,000. General reserve already we are used 50,000. तो प्रॉब्लम में कितना दिया है जनरल रिजर्व 80,000 दिया. इन द प्रॉब्लम यू कैन सी जनरल रिजर्व बैलेंस वाज 80,000. आउट ऑफ 80,000 50,000 वी हैव डेबिटेड, तो 30,000 रिमेनिंग. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम 1 लाख. 1 लाख रुपए पीएनएल अकाउंट बैलेंस प्रॉब्लम में दिया है. अब उसमें से डेबिट कितना करें यहाँ पर 60,000. 60,000 रुपीज वी हैव विथड्रॉन फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, तो रिमेनिंग बैलेंस 40,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000. सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं था प्रॉब्लम में, लेकिन अब क्रेडिट करें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000, तो ये 10,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम. टोटल विल बी 80,000. तो 80,000 वी हैव टेकन रिजर्व्स एंड सरप्लस. लास्ट वन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम्स डिबेंचर्स. तो गिवन इन द प्रॉब्लम 4% डिबेंचर्स एज 70,000. दैट्स ऑल. दिस इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग बोनस शेयर्स. तो पहला काम आपका वर्किंग नोट्स में बता देना कि कितना पैसा हमको चाहिए बोनस के लिए और कितना पैसा चाहिए कन्वर्टिंग द पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड. ये वर्किंग नोट में कर लिए तो प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल हो जाता. देन वी हैव टू पास द एंट्रीज. 3 एंट्रीज फॉर कन्वर्टिंग, 2 एंट्रीज फॉर इश्यूइंग फ्री बोनस शेयर्स, 5 एंट्रीज. देन वी हैव टू शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट along with the notes. Come on students, now we'll start problem number 3. The following is the summarized balance sheet of XYZ company. Balance sheet is given: equity and liabilities, shareholders fund, share capital 3,20,000, reserves and surplus 4,80,000, long term borrowings 5 lakh. The total of the balance sheet 13 lakh, and non-current assets 13 lakh. The balance sheet is given. Notes: share capital 20,000 shares of rupees 10 each, rupees 16 paid up. एक शेयर 20 रुपये का है लेकिन कंपनी कॉल करी है सिर्फ 16 रुपीज, तो अभी 4 रुपीज आने का है. ऑन हाउ मेनी शेयर्स 20,000. तो 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपीज वी रिक्वायर टू कन्वर्ट द पार्टली पेड शेयर्स इंटू फुल्ली पेड. रिजर्व्स में कौन से रिजर्व्स है? जनरल रिजर्व 2,10,000 है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख है, पीएनएल अकाउंट 1,70,000. टोटल रिजर्व्स आर 4,80,000. देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर गिवन 10% डिबेंचर 5 लाख. This is the complete balance sheet. Now what it is asking? The directors of the company decided to issue bonus shares. For this purpose, general reserve account is to be applied for converting partly paid shares into fully paid. Specifically given in the problem. For converting partly paid into fully paid, we have to use general reserve. So 80,000 rupees we have to withdraw from general reserve and issue one bonus share of 20 each for every 4 shares held. 4 existing shares by utilizing capital redemption reserve. Every 4 shares के बदले में एक bonus shares. For every 4 shares held, 1 bonus share. For 80,000 shares, 80,000 है 20,000. For 20,000 shares held, how many bonus shares? We have to find out. अब bonus shares को utilize करने, bonus shares issue करने के लिए we have to utilize capital redemption reserve. So specifically in the problem it is given, for converting partly paid shares into fully paid shares we have to use general reserve. For issuing fully paid bonus shares we have to use capital redemption reserve. So again 3 parts. First working notes, then journal entries, then balance sheet. So first of all, working notes. Amount required for converting partly paid shares into fully paid. 20,000 shares are there. Each share we require 4 rupees. So 80,000 rupees we require for converting. This amount should be withdrawn from general reserve. Second, for every 4 shares held, 1 bonus share will be issued. For 20,000 shares held, how many bonus shares? So 20,000 divided by 4 into 1, 5,000 bonus shares. The company issues 5,000 bonus shares of 20 each fully paid. So amount required 5,000 into 20, 1 lakh. 1 lakh rupees we require for issuing fully paid bonus shares. And this amount should be utilized from capital redemption reserve. That's it. Now we'll come to the journal entries. First journal entry, general reserve account data to bonus to shareholders.
being the amount withdrawn for declaring bonus. Second, share final call account data to share capital, being the final call due on 20,000 shares at rupees 4 per share. फाइनल कॉल ड्यू है 20,000 शेयर्स के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 4 रुपए, तो 20,000 into 4 80,000 रुपीज ड्यू. नाउ शेयर फाइनल कॉल bonus to shareholders account data to share final call, bonus to shareholders account data to share final call, being the final call money adjusted from bonus, being the final call money adjusted from bonus. Now ये 3 entries हो गए converting the partly paid shares into fully paid. Now 2 more entries for issuing fully paid bonus shares. The first entry, capital redemption reserve account data to bonus to shareholders, 1 lakh rupees. Capital redemption reserve account data to bonus to shareholders, being the amount withdrawn for declaring bonus. Secondly, bonus to shareholders account data to share capital, bonus to shareholders account data to share capital, being 5,000 equity shares of rupees 20 each, being 5,000 equity shares of rupees 20 each issued as fully paid bonus shares. That is the narration. That's all. Entries are over. Now we come to the balance sheet. Equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves and surplus. तो याद रखिए हर प्रॉब्लम में फॉर्मेट सेम है. तो आफ्टर डूइंग 2-3 प्रॉब्लम्स यू विल बिकम परफेक्ट इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी. तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 1. नोट नंबर 2, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बैलेंस शीट में दे दिया, प्रॉब्लम में दे दिया, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थर्ड नोट 5 लाख. देन एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, याद रखिए जब भी बोनस शेयर का प्रॉब्लम है एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता. प्री बोनस जो बैलेंस शीट रहती है, पोस्ट बोनस बैलेंस शीट में भी एसेट्स विल रिमेन सेम 30 लाख. नाउ नोट्स. नोट नंबर 1 रिगार्डिंग शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है तो 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप. 25,000 शेयर है, एक शेयर 20 रुपये का, मल्टीप्लाई करो 25,000 into 20, दैट कम्स टू 5 लाख. Of the above, 5,000 shares are issued as fully paid bonus shares. Explanation देना है. ये 25,000 शेयर्स जो लिए इसमें 5,000 बोनस शेयर्स मिले हुए, क्योंकि पहले बोनस से पहले 20,000 शेयर्स ही थे, अब 25,000 हो गए. नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व. बिफोर बोनस जनरल रिजर्व वाज 2,10,000. बैलेंस शीट प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दे दिया कि जनरल रिजर्व में 2,10,000 थे. उसमें से कितना जनरल रिजर्व डेबिट कर दिया, यहाँ पर 80,000 रुपीज डेबिट कर दिया जनरल रिजर्व, तो माइनस 80,000. रिमेनिंग बैलेंस इन जनरल रिजर्व इज 1,30,000. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपीज था बिफोर डिक्लेयरिंग बोनस, लेकिन बोनस के टाइम पे उसको डेबिट कर दिए. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेटा 1 लाख. जब डेबिट कर दिए तो वो अकाउंट खत्म, फिनिश, नील. तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नील. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव नॉट यूज्ड एट ऑल. तो प्री बोनस how much was the profit and loss account balance? 1,70,000. That will remain same, that will not change. So total of the reserves and surplus 3 lakh rupees. And long term borrowings, long term borrowing consists of 10% debentures. जैसा प्री बोनस में था, पोस्ट बोनस में सेम 10% डिबेंचर 5 lakh. The total of the balance sheet 13 lakh liabilities, 13 lakh assets. That's